When we discuss the syllabus, I think the majority of the GST has been done by you. Honestly, there's not too much of GST in the indirect taxation that we have to learn in this particular semester. Um, we have one model of GST here regarding payment of tax. Now, I personally feel there's a lot of repetition here. Something like computation of ITC was already done by you in the earlier semester. So we have the legal provisions section 49, 50, 51, 52. They basically deal with how to pay the GST, what taxes are supposed to be paid, when they are supposed to be paid, then what is not only cash ledger, credit ledger, and all that stuff. And then they have very cunningly added here something called as the manner of utilization of ITC with practical sums. Abhi icing in the cake for the student because they already done this kind of sums earlier somewhere in your syllabus. Problems based on input tax credit. अब टेक्निकली इस वाले पार्ट में वो नहीं आता है बट पूरे जीएसटी का एक ही मॉड्यूल है तो उन्होंने इसमें डाल दिया एंड आई थिंक यू हैव डन दिस अर्लियर आल्सो आईटीसी वाला पार्ट नो वेज नो वरीज एट ऑल विल कवर इट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच then you have section 50 regarding payment of tax what needs to be done in case there is a delay in payment how much interest you need to pay what tax liabilities are there in case you fail to file the returns how to pay those money what about TDS and TCS, tax related source and tax collected source, and then the refund of tax and all that stuff. So technically, unit number one is the easiest and the smallest. Ironically, you are not going to cover the unit one at all, right? It will be done at the dead end of the syllabus. हम जीएसटी का टच नहीं करते अपना कोर पार्ट अब जो होगा वो होगा customs and foreign trade policy. So if you look at unit number 2 and unit number 3, they are all about customs. Unit number two is about introduction to customs. What is customs? Why it is called as customs? What things are covered under Customs Act? When is the Customs Act applicable and all that stuff? And what are the different types of custom duties? And then how to classify the goods? Then we have unit number 3 based on import-export procedure and then warehousing procedure, removal of postal goods and all that stuff. And then the last unit is about foreign trade policy FTA. I think if you do the unit number 1 and unit number 4 very perfectly, it will fetch you the minimum passing marks in the exam. There is no reason why someone should fail in this subject at SEM 6 level because the overall course content is very clear, crystal clear. FTP may be a bit lengthy, but ज़्यादा practical sums नहीं है FTP. There are sums on duty to abide in FTP. Otherwise, there are not too many sums based on unit number 4. बाकी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में सम्स आएंगे केस स्टडीज भी आएंगे बहुत सारे नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर एंड शॉर्ट मतलब मुझे पता है बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है सो मुझे ऐसा 200-300 पेज का बड़ा बड़ा स्टडी मटेरियल देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है वो सब देख के देखा एग्जाम आने मैंने एंड पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सो मेनी पेजेस Customs, we will have unit number 2, we will have, 2 and 3 will have roughly 5 to 6 modules. हम module wise बात करेंगे. And we'll start with customs. अपना internal के लिए unit 2 and unit 3 are the core part. ये 2 units आपका presume करके चलो कि आपका internal में है. इसमें से अगर कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है तो I'll announce and I'm very transparent right from day one. Okay. So this was all about syllabus. Notes content will be uploaded on the Google Classroom by me. I have not yet formed Google Classroom for your classroom. BAF के लिए मैंने मना दिया था, BAF honors के लिए मैंने नहीं बनाया. No reason. My laptop was not there with me yesterday. It was there in the college और on ही रह गया था. तो इसलिए उसका चार्जिंग भी नहीं है. Otherwise my laptops are fully charged on a normal day at 7 o'clock in the morning. तो आज मैं अभी लेक्चर्स के बाद बना दूंगा.
All lectures will be most likely, as far as possible, they shall be recorded and they shall be uploaded immediately on the same day on the Google Classroom. Time wise, date wise, सब कुछ record होगा as far as possible, unless there's a major issue. Okay, my laptop has a major issue of microphone. That's the reason I'm using this to cover the lecture. Otherwise, voice record होगा ही नहीं. Coming to the content, let's actually start with the uh, import, sorry, with the customs law. Why it is called as customs first of all? Why not something else? Why not import tax? Why not foreign input tax? Why not something else? Why it is called as customs? What do you mean by customs? Customs are the traditions. Customs are the habitual things that we have done in the past. In olden days, during the times of kings, there were no countries, there were kingdoms. There used to be kingdoms. तो हर एक राजा का अपना एक एरिया होता था, एक उसको वो किंगडम बोलता था, जहां पर वो रूल करता था. But then, if anyone from another kingdom B wants to sell the goods in kingdom A, he had to enter with his goods inside kingdom A. वो जमाने में तो अमेजोन था नहीं कि आप घर बैठ के वहां से कुछ इंडिया में बेच दो. So when they used to enter the through the boundaries of the kingdom A, they used to be stopped by the soldiers, and they used to be told, "Boss, you are coming in our kingdom to sell the goods. कोई दिक्कत नहीं है हमें. आप हमारे किंगडम में आओगे, यहाँ पर रहोगे, यहाँ पर पैसा कमाओगे. So you have to pay some kind of money as an entry tax." As an entry tax. आपका गुड्स हमारे प्रदेश में आ रहा है तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हम आपको अंदर आने के लिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज वोंट अलाउ. दिस वाज डन लीगली, मतलब इट वाज नॉट ए काइंड ऑफ ब्राइब भी वगैरह नहीं दे रहे थे कि भाई पैसा खिला के अंदर आ रहे. नहीं, दैट मनी इज टू गो टू द किंग. किंग का ट्रेजरी में जाता था एंड इट वाज यूज्ड फॉर रनिंग द किंगडम, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द people and for the protection of the overall kingdom as well. So it became a custom to charge such kind of money. It was called as octroi, it was called as entry tax. If you go to Marshallsghat, there's a place called as Naneghat. Marshallsghat में एक जगह है जिसका नाम है नानेघाट. नाने घाट, नाने मतलब coins. नाने in Marathi is called as coins. So there is a place, there's a container there. एक मटका टाइप एक राउंड कंटेनर है. कभी भी वहां पे ध्यान से देखते तो दिखेगा, उसका रूल्स दिखेगा. So anyone who used to come from outside that area in the Sahyadris, उसको वहां पे कुछ पॉइंट्स डालने पड़ते थे एज ए एंट्री टैक्स. अच्छा, पोस्ट 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी राजा महाराजा का जमाना चला गया धीरे धीरे. Post independence, almost all the states became free of the king and the monarchy rule, and we had a normal government वाला. तो गवर्नमेंट ने उसी कस्टम को कंटिन्यू किया और कहा कि भाई अभी इंडिया के बाहर से कुछ इंडिया में आएगा तो हम उस पर क्या लगाएंगे, कस्टम एक्ट अप्लाई करेंगे और कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे. कस्टम्स इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तो आपको पता होगा, बोलो. What is indirect tax? So anything that is not a direct tax is indirect tax. What is direct tax? So anything that is not anything that is indirect tax is not direct tax. Simple. So जो डायरेक्ट नहीं वो इनडायरेक्ट है, जो इनडायरेक्ट नहीं वो डायरेक्ट है. क्या होगा, कुछ भी बोलूंगा ऐसे कुछ भी बोलने का. आज तो क्वेश्चंस मार्क्स कम नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन मत लो उसके. See, any tax on person. When I say person, it can be an individual, it can be a bank, it can be a school, it can be a college, it can be a company.
It can be any organization that is called as direct tax. जब मैं इनकम अर्न करता हूँ तो उसमें मुझे पे करना पड़ता है टैक्स, इनकम टैक्स. अर्लियर टाइम्स में व्हेन आई टू गिफ्ट समथिंग टू समवन, मुझे उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ता था. ये डायरेक्ट टैक्स है. When you buy the shares, you pay security transaction tax. When I buy a car, I pay the road tax. I pay the GST. GST is paid to the government. Road tax is paid to the RTO. That tax is not levied on me. It is levied on a goods, on a particular movable item. When I buy a property, I pay the property tax. ये सब जो टैक्सेस गुड्स या सर्विसेज पे लगते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट. मुझे जो टैक्स पे करना पड़ता है वो डायरेक्ट टैक्स. दोनों मेरे जेब से ही जाते हैं पैसे. एक जगह पे मेरा पर्सनल लायबिलिटी है, एक जगह पर लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है या सप्लायर के ऊपर है. सप्लायर बोल सकते, जीएसटी में पूरा कंसेप्ट सप्लायर के ऊपर ही है. So when I go to a movie ticket to buy a ticket for a movie, वो बोलेगा इतना पैसा है मैं उतना दे दूंगा, खत्म. टैक्स पे करने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है. While collecting the charges for the movie ticket, they will really specify this is the entertainment tax or this is the GST, this is blah blah blah. और फिर वो टैक्स पे करने का जिम्मेदारी किसका है? उस थिएटर पर्सन का. वो आइनॉक्स वाले का, पीवीआर वाले का, मेरा जिम्मेदारी नहीं है. उसके लिए वो इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है. I am paying it indirectly to the person, and that person is liable to pay to the government. That is indirect tax. Whereas when I earn the money, directly मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, I am personally liable. कल मैंने कार खरीदा, रोड टैक्स पे किया, वो गवर्नमेंट के पास नहीं गया, मेरा सिर्फ मैंने दे दिया था. डीलर ने आगे नहीं पे किया तो मेरा गलती नहीं है उसमें कुछ. I am not liable. In case of indirect tax, the owner of the goods or the receiver of the services won't be personally liable. Supplier will be liable. That is indirect tax. ठीक है. In custom is the indirect tax. Custom is a tax. It is a duty imposed on import and export of the goods. What is customs? What is customs? So customs is a duty imposed on imported or less commonly exported goods. Why they are using the word less commonly exported goods? Because generally we don't charge import duty on exports. See, we are a developing nation, and sorry to say, but then ये और at least for next 10 decades ऐसे ही रहने वाला. Because our economy is not developing at that stage. Our society is not developing at that stage. Government always wants that import should be less and export should be more. Because when you export the goods, you earn the foreign currency. And when you import the goods, you have to pay the foreign currency. तो हम तो यही चाहेंगे जितना हो सकता है उतना फॉरेन करेंसी ज्यादा है इंडिया में, गुड्स सेल करके इंडिया के बाहर. और जितना हो सके उतना इंपोर्ट कम हो, ताकि उतना पेमेंट कम करना पड़े बाहर. पैसा कंट्री के अंदर रहेगा तो इकोनॉमी ग्रो होगा. दैट इज द होल लॉजिक. So government will always try to put more duties on the imports, and export to normally government duty नहीं charge करता because you want to promote the export. But then there are some items जहाँ पे एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी लगता है. एक एग्जांपल लेता हूँ, एनिमल स्किन्स एंड हाइड्स. एनिमल स्किन्स एंड हाइड्स व्हिच आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी. उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया लेस कॉमनली एक्सपोर्टेड गुड्स. When I say less commonly exported goods, it means I'm not charging duty on all the exported goods. Few goods in the export list
they are they are levied with the custom duty. Import पे तो 99% 100% ड्यूटी लगना ही लगता. Who decides what taxes should be charged? On what basis they decided कि tax कैसे charge करना? Can the government tomorrow say कि भाई तुमने एक गिलास पानी पिया tax भरो? You are walking for 1 kilometer to pay this much tax. Government can't randomly put taxes at its own whims and fantasies. मुझे जब मन में आया मैंने बोला ये टैक्स लगा दूंगा वो टैक्स लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता. तो कल शाम को 8 बजे मोदी जी का भाषण होगा और उसमें बोला जाएगा फॉर एवरी डे यू ब्रीथ द एयर यू पे 10 रुपीज एज द टैक्स. तो साल का पर पर्सन 3650 टैक्स भरना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है बॉस. वी हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 लिस्ट. List 1, list 2, list 3. List 1 union list. List 1 is the union list. List 2 is the state list. और एक शेड्यूल 3 होगा जिसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट. इस लिस्ट में है ना उन्होंने नाम दिए हुए कि ये टैक्स यूनियन लिस्ट में जो नाम दिए वो सब टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर सकती. all the goods that are given in the all the taxes that are given in the union list can be charged only by the union government, that is the central government. Under the state list there are certain taxes which can be charged only by the state government, and there are some goods on which taxes can be levied by both state as well as central government. वो सब कहाँ पर आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. सो देयर इज वन यूनियन लिस्ट का लिस्ट नंबर 1 में पॉइंट नंबर 83 लाइन वाइज से एंट्रीज किया हुआ है. एंट्री नंबर 83 इज द section that enables the union government to charge custom duty, and this custom duty is on imports into India and exports out of India. So concept based question में क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा, dash allows the union government to charge custom duty. आंसर आएगा एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट. यहाँ dash of the union list enables the government, central government, to charge custom duty. It will be entry number 83. ध्यान में रखो. क्लियर? अब सर आपने बोला custom duty is on import into India and export out of India. So I need to understand something called as import and export. अब ये क्या बात होगी सर? Everyone knows what is import, what is export. कोई लॉजिकल बात कर रहा नहीं. See, when we are learning any kind of tax, it's a law, and people will always misuse the terms in the law as per their convenience to avoid payment of duties. तो मैं इंडिया के बाहर गया लेक्चर लेने, वहां पर मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो मैंने वहां पर नया लैपटॉप और अपना खराब वाला लैपटॉप वहीं पे छोड़ के आ गया. जब मैं इंडिया में वापस आया तो कस्टमर ने मुझे पकड़ लिया, बोला आपने लैपटॉप इंपोर्ट किया. मैंने बोला कौन सा लैपटॉप इंपोर्ट किया? मैंने कहा अगर मैंने इंडिया में एक लैपटॉप लाया है तो इंडिया से एक लैपटॉप कम भी किया है, वो तो मैं वहां पर छोड़ के आया हूँ, तो इंपोर्ट हुआ ही नहीं. जितना इंडिया में आया उतना इंडिया से बाहर गया. आई वोंट पे द ड्यूटी. हर कोई अपना अपना अलग अलग मीनिंग निकाल के they will try to avoid payment of duties. So the government, what the law says, let us define
To avoid any such kind of conflicts and confusions, let us define what is this term import and export. What is import? Bringing into India from a place outside India. Bringing into India from a place इंडिया के बाहर से इंडिया में कुछ भी लेके आए तो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट कहलाएगा. Import starts when the goods enter the territorial waters of India. The concept called as Indian territorial waters. We'll discuss later on. अब मैं उसको लेके बहुत बहस नहीं करना चाहता. Import starts when the goods enter the territorial waters of India. अब बोलने के लिए territorial waters है, but it also includes the land. Okay. So import starts when the goods enter the territorial waters of India, and when it is completed, when the goods are cleared for home consumption. आप बोलोगे लैपटॉप लाया इंडिया के पास, आप क्या बोलोगे कौन सा लैपटॉप है? इंपोर्टेड लैपटॉप. इन आवर वर्ड्स, इन कॉमन मैन्स वर्ड्स, इट्स इंपोर्टेड लैपटॉप. कस्टम ऐसा नहीं बोलता. कस्टम कहता है आपने इंडिया के बाहर से एक लैपटॉप इंडिया में लाने की शुरुआत की, जैसे ही वो लैपटॉप इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में आएगा, व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर, डिस्कस लेटर ऑन. Moment it enters the boundaries of Indian territorial waters, we will say import has commenced. Import शुरुआत हो गया import. Then it will enter the port of India. Assuming it is coming by ship, it will come at the port of India. And here it will be called as imported laptop. उसको कब तक इंपोर्टेड लैपटॉप बोलेगा कस्टम वाला? जब तक आप उसके ऊपर ड्यूटी पे देंगे उसको आप अपने घर पे नहीं लेके जाओ. आपने उस जगह से ड्यूटी पे करके वो चीज अपने घर पे लेके चले गए, अब वो आपके इंडियन गुड में मिक्स हो गए. अब वो इंपोर्टेड लैपटॉप कस्टम के लिए वो कब तक इंपोर्टेड था? जब तक तुमने ड्यूटी नहीं पे किया. जब तक आपने ड्यूटी नहीं पे किया, हमने बोला आपका इंपोर्टेड लैपटॉप हो. इंपोर्टेड है मतलब इसके ऊपर ड्यूटी. सी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर द टैक्सेबल इवन अंडर द कस्टम. कस्टम एक्ट में जैसे जीएसटी में सप्लाई इज द प्राइम concept of taxability. In customs, the moment there is an import or export, हम बोलेंगे भैया ड्यूटी पे करना पड़ेगा. लेकिन जैसे आपने ड्यूटी पे कर दिया, हम बोलेंगे अभी ये हमारे लिए इंपोर्टेड आइटम नहीं है. अब ये क्या हो गया तुम्हारा? होम गुड्स हो गया, इंडियन गुड्स हो गया. तो even though we call it as imported laptop in our common parlance, in our common language, but for customs it is no longer imported. It will be imported till the time you don't pay the duty. The moment you pay the duty, it won't be called as imported. Okay, लॉजिक उसका ऐसा है कि भाई इंडिया के बाहर से कोई चीज इंडिया में आ रहा है, हमने उसको होल्ड करके रखा है. आपने ड्यूटी पे करने तक, आपने जैसे ड्यूटी पे कर दिया, वो आपकी इंडियन गुड में मिक्स हो गई. अभी वो इंडियन, अभी वो इंपोर्टेड नहीं चल रहा है. तो देखते हैं डेफिनेशंस. I'm not defining India right now. People might say, why to define India? We need to understand what is the Indian territorial waters या territorial waters of India. हम उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे. First thing, import. What do you mean by import? Import means bringing into India from a place outside India. It commences when the goods enter the territorial waters of India, as I told you earlier, and it completes only when the goods become part of the mass of the goods within the country. And when does this happen? When you pay the duty and you take the goods at your home. What is export exactly, Ulta? Taking out of India from a place in India. इंडिया के अंदर से गुड्स इंडिया के बाहर लेके जाना इज एक्सपोर्ट. So any goods that are moving outside India that are moving from India to a place outside India will be always called as export.
What is imported goods? I told you what are imported goods. इंडिया के बाहर से जब गुड्स इंडिया में आता है ना, तो उसको इंडिया में उतार के एक जगह पे रखा जाता है जिससे कहा जाता है कस्टम एरिया. Custom area is that common place where the goods are unloaded once they come into India. Same way you want to export something outside India, वो कोई ट्रेन तो है नहीं कि भाई ट्रेन आ गया आपने सामान चढ़ा दिया चले गए. You need to bring your goods at the port. You have to keep it at one place. Ship आएगा, फिर goods का loading होगा, फिर ship जाएगा. In both the cases, export हो या import हो, import वाले केस में when the goods enter into India, you can't say to the ship भाई तू रुक जा, तो रुक जा, गुड्स का वैल्यूएशन करना है, गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे, उसके ऊपर कितना ड्यूटी है वो निकालेंगे, कि जो ओनर है गुड्स का वो ड्यूटी पे करेगा, फिर गुड्स का अनलोडिंग का. इतना टाइम नहीं है भाई शिप को भी टाइम नहीं है, वहां पे जगह भी नहीं है. एक शिप जाएगा तो और दूसरा शिप आएगा. तो जैसे शिप आएगा गुड्स को अनलोड करके एक जगह पे रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कस्टम एरिया. कस्टम एरिया इज द कॉमन एरिया एट द पोर्ट वेयर द गुड्स आर केप्ट इन ओपन टिल द टाइम यू डोंट पे द ड्यूटी. वहां से कुछ बाहर कहीं तो भी नहीं जाएगा, उनमें से कुछ चोरी हो सकता है, बोल नहीं सकता. So imported goods are the goods which are kept at the custom area and which are not yet been cleared for home consumption. क्लियर करना मतलब उसके ऊपर ड्यूटी करके गुड्स अपने घर पे लेके जाना, वो हम आगे देखेंगे. और अब मैं उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है, आई विल यूज दिस वर्ड एवरी नाउ एंड देन. गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, कस्टम खत्म ही नहीं होता उसके बिना. Goods cleared for home consumption, goods cleared for home consumption. In very simple words, when the goods are imported into India, वो एक लोकेशन पे आने के बाद, कस्टम एरिया में रुकने के बाद, वहां पर एक कस्टम ऑफिसर होगा, वहां पर एक कस्टम हाउस होगा, who will check out, who will ensure that आप बिना ड्यूटी पे किए गुड्स लेके नहीं जा सकते. अच्छा, goods are kept in the custody of the Port Trust Authority of India. इनके कंट्रोल में रहता है वो गुड्स. कस्टम वाले को आपके गुड्स से कोई मतलब नहीं, उनको ड्यूटी से मतलब. यू पे द ड्यूटी एंड लेके जाओ भाई गुड्स, हमें कोई दिक्कत नहीं. इट इज द पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हु आर द कस्टडियन ऑफ द गुड्स. दे आर द केयरटेकर ऑफ द गुड्स. अच्छा, गुड्स, मेरा गुड्स, लेट अस से आई एम इंपोर्टिंग ए मशीनरी वर्थ ₹5 crore फ्रॉम जर्मनी. That machinery came by the ship. We unloaded by using a crane. We unloaded the machinery and kept in the custom area. Custom area is a very vast open space, 10 times bigger than the campus of the Somaya. और ओपन हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, शेड वगैरह, बट नॉर्मली ओपन होता है. अब मेरा मशीनरी आ गया 5 करोड़, हमने रख दिया वहां पर कस्टम एरिया में. अब मुझे क्या करना चाहिए एज द ओनर ऑफ द गुड्स? I must provide all the documentary evidence. These are the goods imported by us. These are the supplies. These are the bills. This is the amount we have paid or we are going to pay. And this is the value of the machine and this is the custom duty we are willing to pay. I will pay the duty and take up the goods. Duty pay करो, goods लेके चले जाओ. उसका पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, शायद आज ही करेंगे, देखेंगे कब करना. मेरा सवाल है कि वो अगर मान लो मेरा मशीनरी इंडिया में आ गया 5 करोड़ का, मेरे पास ड्यूटी भरने के लिए पैसे नहीं, 5 करोड़ के ऊपर कम से कम 40%, 2 करोड़ तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगा. मेरे पास पैसे ही नहीं ड्यूटी भरने, कस्टम ड्यूटी भरने. सो आई फेल टू क्लियर द गुड्स. मशीनरी कहाँ पे रखा हुआ है? पोर्ट पे. कहाँ पर है? कस्टम एरिया में. कस्टम एरिया किसका जगह है? सब पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जगह है. कस्टम एक्ट कहता है कि भाई आपका गुड्स सिर्फ शिप से इंडिया के बाहर से इंडिया में आएगा या बाय प्लेन भी अगर इंडिया के पास से इंडिया में आएगा, हम उसको एयरपोर्ट में रखेंगे, एक कॉमन एरिया में रखेंगे जहाँ बिना ड्यूटी पे किए गुड्स रखना अलाउड है, जिसे कस्टम ड्यूटी, कस्टम एरिया बोलते हैं. कस्टम एरिया वो जगह है जहाँ पे बिना ड्यूटी पे किए आप गुड्स रख सकते हो. तब तक रख सकते हो, उसका रीजनेबल टाइम है.
3 से 5 दिन, max to max 5 दिन is the time for which the goods can be kept at the custom area. उतने टाइम में अगर आपने गुड्स रिमूव नहीं किया, उतने टाइम में अगर आपने गुड्स वहां से नहीं हिलाया, तो बॉस आपको फिर कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा. Those charges are called as demurrage charges. They are called as demurrage charges. Demurrage charges are the charges paid for keeping the goods in the custom area beyond a reasonable time. The reasonable time is generally 4 to 5 days max. And that is highly situational. Sometimes the goods can be kept for a much longer period than 5 days. And still you don't need to pay any delivery charge. जो कोविड के टाइम पे जो कुछ इंडिया के बाहर से आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला इसको आप लेके ही नहीं जा सकते. They are kept on hold for so many days. वहां पे डिमोरेज चार्ज शायद नहीं पे करना पड़ा होगा इंपोर्टर को. क्यों? Because he was not at fault. Situation was such that goods were kept there beyond a reasonable time, just to control the pandemic that was caused because of the COVID. So let's discuss one last concept called as goods. How do you define goods? What can be called as goods? So पहले तो goods का मतलब है any kind of movable item. Because immovable होगा तो vendor के पास इंडिया में कैसे लाओगे? Common sense used to. Anything that is movable and that can be brought from outside India to India will be called as goods. And it includes baggage. What is baggage? Any kind of accompanied or unaccompanied luggage is called as baggage. So Virat Kohli क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, अपने साथ जो भी बैग लेके जाएगा, जो भी लगेज लेके जाएगा, वो सिर्फ बैगेज कहलाए. वो accompanied बैगेज मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ एज ए क्रिकेटर, वो accompanied बैगेज. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है रोहित शर्मा वेंट लेटर ऑन, रोहित शर्मा बाद में गया, उसको लड़का हुआ तो ही हैड ए पैटर्निटी लीव, तो वो बोला मैं फर्स्ट मैच नहीं खेलेगा. वो 4-5 दिन बाद में गया. इवेंट ऑन 23rd of November. कोई दिक्कत नहीं. रोहित शर्मा ने अपना सब क्रिकेट किट्स वगैरह जो था पहले बेच दिया, वो भी बैगेज कर रहा है. आप उसको बोलेंगे अनअकम्पनीड बैगेज. ओनर ऑफ द बैगेज इज नॉट देयर विद द बैग्स, सिर्फ बैग ट्रांसपोर्ट किया यहाँ से, चार्जेस पे किया होगा जो भी होगा. सो बैगेज मीन्स accompanied or unaccompanied luggage of any passenger. अच्छा, बैगेज ऑल्सो मीन्स दैट एयरक्राफ्ट जो गुड्स कैरी कर रहा है. It also means the vehicles that will carry the goods from one place to another. The vehicle तब आता है जब there is a landlocked country. In two countries are landlocked. India and Nepal are landlocked countries. उनके इसमें कोई समुद्र तो है नहीं कि बीच में शिप से जाएंगे, तो वहां पे आएगा vehicle. When you fly, aircraft आ जाएगा. And when you go through the water, वहां पे आएगा vessels. Any object that can float and carry the goods and the passengers in the sea can be called as the vessel. Boat is a vessel, ship is a vessel. Emergency boat can be called as a vessel. Life-saving jackets can be called as a vessel as such. So goods includes any kind of
vessel, any kind of aircraft, any kind of vehicle. It includes baggage. अच्छा, जब कोई ट्रक या टेम्पो नेपाल से इंडिया में आ रहा है, वो सामान तो भर के ला रहा है, साथ में वहां से वो ट्रक के अंदर पेट्रोल भी आता है इंडिया। ट्रक के इंजन में इंजन ऑयल भी होता है, वो भी इंडिया में आ रहा है। ट्रक के अंदर 2-3 बॉटल्स उन्होंने अलग से इंजन ऑयल रखा हुआ है, वो भी इंडिया में आ रहा है। वो इंडिया में बेचने के लिए लाया उन्होंने नहीं सर। These items that are coming along with the vehicle will be called as stores. When a aircraft lands from US to India, that aircraft will have a lot of items of eatable items, cold drinks, alcohol, water that has been brought from US to India. All those items that are meant for consumption within that particular aircraft will be called as stores. So, sir, goods includes vehicle, aircraft, vessel, any stores, any baggage, and then any kind of currency and negotiable instruments. Negotiable instruments, travelers say, I'm going to Europe. यूरोप में बहुत चोरियां होती है। पेरिस तो ऐसी फेमस है। पेरिस में तुम बैग वैग लेके जा रहे, तुम्हारा चलती बैग लेके भाग जाएंगे लोग। साउथ अफ्रीका जाओ, दिल शो यू गन, तुम्हारा पैसा वैसा सब लेके निकल जाएंगे। पुलिस कंप्लेंट करने जाओ, कुछ नहीं करेंगे। इंडिया तो ऐसी बदनाम है। वी आर मच सेफर देन देम, वी आर 100% मोर सेफर देन देम। Point is, when you go to these countries, sometimes you might not carry the cash, you might not carry any card, you might carry travelers checks. Travelers checks are nothing but the checks that are prepaid checks that are acceptable as payments. So currency and negotiable instrument will be also called as goods. अब इसमें ऐसे नहीं कि फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी will be also called as goods. इंडिया के बाद से इंडिया में इंडियन करेंसी लेके आएगा तो वो भी गुड्स कहलाए, उसका भी कुछ लिमिट्स हो। ठीक है, we'll stop here for the day. We are almost at the dead end of the lecture.